Today we will discuss haloalkanes and haloarenes. So what are haloalkanes and what are haloarenes? First we will try to throw some light on hydrocarbons. So hydrocarbons are the compounds. These are the organic compounds made up of only hydrogen and carbon. If we put an example, this CH4 is a hydrocarbon because it contains only carbon and hydrogen. Exactly C6H6 is a hydrocarbon. This is methane, this is benzene. So it also contains only carbon and hydrogen. So it is a hydrocarbon. So hydrocarbons में से हमारे पास बहुत से classes है hydrocarbons के, but we have one class of compounds known as alkanes. So these alkanes are actually saturated hydrocarbons. Contain single bond between carbon and carbon. And alkanes are actually saturated aliphatic open chain hydrocarbons contain single bond between carbon and carbon. Their general formula is CnH2n plus 2. So here n is equal to 1, 2, 3, 4, so on. So we have one more class of hydrocarbons. This one class, we have one more class. These are known as aromatic hydrocarbons. और इनको हम बोलते हैं arenes भी बोलते हैं इनको. These are actually ring type of compounds, cyclic or ring type compounds. ये ring type होते हैं. The simplest arene is benzene. Simplest arene होता है benzene, C6H6. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This contain alternate single and double bond, double single फिर double. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या simply हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. This is the benzene ring, ऐसे with alternate single and double bonds. This is benzene ring. So the simplest arene is benzene. Simplest arene benzene है. अब हम क्या करते हैं? What we do when we replace one or more than one hydrogen atoms. Any one or more than replace one or more than one hydrogen atom from the molecule of alkane or arene by the same number of halogen atoms. The compounds obtained are known as halogen derivatives of alkanes or arenes, or simply haloalkanes or haloarenes. इन सिंपल टर्म्स में अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस करेंगे फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन और एरीन बाय द सेम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, जो वहां पर नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं, they are known as halogen derivatives of alkanes or arenes, or simply we can say that they are haloalkanes or haloarenes. यहां पर halogen हो सकता है, halogen यहां पर एक्ट करता है एज फंक्शनल ग्रुप. halogen यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, X से करते हैं halogen. So this is a functional group. Functional group, you know, functional group is the atom or group of atoms which decides the chemical
reactions of a particular compound, or which decides the chemical properties of a particular compound. So अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, if we write here some examples. So this is CH3, ये मीथेन है. I will replace one hydrogen, CH3 by this X is halogen here. So CH3 CH2, यहाँ पर ये ईथेन में से मैं करूँगा एक H replace by this X. I will replace CH3 CH2 CH2 X से रिप्लेस करता हूँ एक हाइड्रोजन. ये प्रोपेन में से मैंने कर दिया एक हाइड्रोजन रिप्लेस. So these are haloalkanes, ये haloalkanes हैं, or halogen derivatives of alkanes. Exactly, I will replace this benzene. यहाँ से मैं एक H करता हूँ रिप्लेस. So एक H मैंने कर दिया रिप्लेस हेलोजन से. यहाँ पर X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, समटाइम्स फ्लोरीन. हम एक कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH3 CHX CH2X. यहाँ पर मैंने इसे 2 कर दिया रिप्लेस. इसे मैं 3 कर सकता हूँ रिप्लेस. एग्जैक्टली आई राइट हियर दिस इज बेंजीन. यहां से मैं कर सकता हूं ये X है, यहां से मैंने 2 कर दिए रिप्लेस. सो दीज आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स और एरीन्स. सो इनका हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं. हम इनका जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, और X अगर हम लिखेंगे हेलो अल्केन का जनरल फार्मूला, दिस इज हेलो अल्केन. RX, यहां पर ये R है अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है. X यहां पर है हेलोजन फंक्शनल ग्रुप. इसी तरह हम लिखेंगे हेलो एरीन का जनरल फार्मूला, हेलो एरीन का वो लिखेंगे हम, उसका भी ये RX. यहां पर R जो है दैट इज एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप बोलते हैं उसको. यहां पर X है हेलोजन. So this was about haloalkanes and haloarenes. अब इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. We can classify these haloalkanes or haloarenes on the basis of number of halogen atoms they contain. For example, we have mono halogen derivatives, we have di halogen derivatives, we have tri halogen derivatives, we have tetra. Mono means containing the haloalkanes or haloarenes containing one halogen. So this is mono. अगर हम लिखेंगे यहाँ पर this is mono halogen derivative. Di CH3 CHX CH2X, this is di halogen derivative. Similarly, we have if the alkane contains 3 halogen atoms, then it is called tri. When it contains 4, that is called a tetra. Similarly, we have this is monohaloarene. ये monohaloarene है. This is dihaloarene. ये 2 करता है content. Similarly, we have 3 tri or tetra. So we can classify halogen derivatives on the basis of number of halogens. Halogen atoms they contain. For example, we have mono, di, tri, and tetra. If we have more than one halogen atoms in a particular haloalkane or haloarene, so we call them polyhalogen derivatives. Polyhalogen derivatives. So poly हम बोलते हैं अगर किसी हेलोअल्केन या हेलोएरीन में एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स हैं, उसको हम जनरल नेम देते हैं पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं इसको. Polyhaloalkane or polyhaloarene. We have also fluorine derivatives. Fluorine derivatives है हमारे पास. Fluorine, for example, we have fluorine derivatives CH3 CH2 PF. इसी तरह we have fluorine derivatives fluoroarene. These fluorine derivatives have they differ considerably in properties as uses than the other halogen derivatives. So because of this reason, sometimes chemists do not include these in halogen derivatives. यानी इनको वो include नहीं करते halogen derivatives में because of their different properties and uses.
So these halogen derivatives are very important compounds. They may be synthetic or they may be natural. यानी उनको हम prepare laboratory में भी कर सकते हैं और उनका natural source भी हो सकता है. यानी we can derive them from natural sources. So here we will discuss some important compounds. We have a compound. For example, we have chloromycetin है हमारे पास. Important एक halogen derivative है chloromycetin, या हमारे पास है chloroamphenicol. These are very important compounds used as antibiotics. And antibiotic मतलब against these bacteria or germs, we use them as medicines. So these are used for the treatment of typhoid. इसको हम कहते हैं टाइफाइड फीवर होता है ना, उसी को ट्रीट करने के लिए we use these drugs, these medicines. These are produced by soil microorganisms. उनको प्रोड्यूस करते हैं soil microorganisms. We have one more important compound, halogen derivative. We have chloro derivative of quinine. So this medicine is used as it is an effective medicine against malaria. That is, it is used as anti-malaria drug. इसको हम कहते हैं as anti-malaria drug इस्तेमाल. यानी to treat malaria. Malaria, you know, it is an infection caused by biting of that mosquito. यानी मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है. उसी को ट्रीट करने के लिए we use this chloro derivative of quinine. So इसको हम कहाँ से करते हैं obtain? इसका नेचुरल सोर्स है सिनचोना बार्क से करते हैं यूज. सिनचोना एक ट्री है, उसके बार्क से हम ये निकालते हैं, बार्क से. So we have one more this halogen derivative, that is CF3CHBrCl. इसको हम बोलते हैं हेलो, जनरल नेम हेलो इथेन बोलते हैं इसको. हेलो इथेन है ये. इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक यूज करते हैं. एनेस्थेटिक का मतलब है वो यूज दिस इन सर्जरी, यानी बेहोश करने के लिए वो यूज दिस. एनेस्थेटिक हम करते हैं यूज किसी को बेहोश करने के लिए ताकि उसकी सर्जरी हो. सो वी हैव वन मोर. वी हैव फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, यानी सम फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, यानी उन फ्लोरीन डेरिवेटिव्स हैं. we use them as these are considered as potential blood substitutes, यानी just to carry some function of the blood. for example, ऑक्सीजन करते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन करता है ब्लड कैरी, इस तरह वो भी करते हैं ब्लड कैरी. Now these compounds are very important. These are importance. These halogen derivatives are importance. For example, these are used as intermediates in synthetic organic chemistry. यानी we prepare many compounds by using them as parents in synthetic organic chemistry. Why? Because of two reasons. एक तो ये easily हम prepare कर सकते हैं laboratories में, यानी we can prepare them with greater ease in the laboratory. Also, they are very much reactive. और ये reactive है, बहुत ज़्यादा reactive है ये compounds, ये halogen derivatives. So we can also classify them. यानी एक तो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया on the basis of number of halogen atoms present in the halogen derivative or haloalkane or haloarene. So एक और हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनको based on the type of halogen. यानी type of halogen, यानी कौन सा halogen ये contain करते हैं. For example, we have, if they contain fluorine, they are called fluoro derivatives. Fluorine derivatives. If they contain chlorine, they are called chlorine derivatives. If they contain bromine, they are called bromine derivatives. If they contain this iodine, they are called iodine derivatives. So on the basis of type of halogen, these are also classified into 4 types: fluorine derivatives, chlorine derivatives, bromine derivatives, and iodine derivatives. This was about haloalkanes and haloarenes. So these are the 2 important classes of compounds obtained from alkanes and
arenes by the replacement of one or more than one hydrogen atoms from these compounds by the same number of halogen atoms. Hope that you got it. Thanks.